बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो MCQs जो चैप्टर यूनाइटेड नेशन से हैं। और इस वीडियो में हमने दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल और जनरल MCQs जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, और सेकेंड पार्ट या द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम तरह MCQs जो कि लास्ट 22 ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 11 years of science papers and 11 years of commerce papers, उनको भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, वो तमाम तरह स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साइंस के हों या कॉमर्स के हों या आर्ट्स के हों। तो आपने ये वीडियो एंड तक बहुत थॉरली देखनी है, बहुत केयरफुली देखनी है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला MCQ है हमारे पास, द वर्ल्ड वॉर II broke out in 1914, 1971, 1939, 1940. Second है, the Second World War ended in the spring of 1949, the autumn of 1945, the spring of 1945, the spring of 1950. The World War II was fought between Allies and Nazis, Axis and Allies, Soviet Unions and Axis, none of them. अब आपने करना यह है कि आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को एक नोटबुक में लिख लीजिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the answers. फर्स्ट का आंसर है 1939, सेकंड का आंसर है स्प्रिंग ऑफ 1945 और थर्ड का आंसर है एक्सिस एंड अलाइज। अगर आप चाहते हैं कि प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर है द इंग्लिश लैंग्वेज, उसके MCQs आप देख सकें यूं ही, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन मौजूद है, उसे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। The Second World War led to the creation of the League of Nations, the United Nations, the League of Continents, none of them. After the World War I, the human race was drawing closer together because of war. The United Nations, scientific developments, none of them. Let us not turn our eyes away from the sufferings of our neighbors, and let there be peace in the world. It was the voice and prayer of John F. Kennedy, George Bush, Asians, the world communities. आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स नोटबुक में लिख लीजिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। Here are the answers. The United Nations organization was founded in April 1943, April 1944, April 1945, April 1947. The United Nations was founded after the failure of the League of Nations, the United Countries, the League of Continents, none of them. The aim of the United Nations is to prevent illiteracy, war, poverty, literacy. The primary objective of the United Nations is to prevent illiteracy, war, poverty, and literacy. वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लिए और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। Here are the answers. 7 का है अप्रैल 1945, 8 का है द लीग ऑफ नेशंस, 9 का है वॉर और 10 का है वॉर। चलते हैं आगे की तरफ। 11th MCQ है, the secondary object of the United Nations is to prevent illiteracy, prevent war, fight social evils, work on literacy. In fulfilling its main objective, the UNO seems to be successful, unsuccessful, harmful, none of them. Another field of the United Nations is its fight against economic issues, terrorism, social evils, extremism. आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। Here are the answers. Fight social evils 11 का आंसर है, 12 का unsuccessful और 13 का है social evils. अगर आप चाहते हैं कि प्रो सेक्शन का चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद से रिलेटेड MCQs की भी वीडियो देख सकें, तो स्क्रीन के टॉप राइट पर आपके पास आई बटन है, उसे क्लिक करके पाकिस्तान जिंदाबाद के MCQs भी इसी तरह से देख सकते हैं। One way of preventing war is to ban war, make weapon of mass destruction, spread education, remove discontent. The probable reason for the outbreak of a new world war may be the United Nations, the discontent, little quarrels among nations, war weapons.
The United Nations Day is celebrated on 24th October, 24th November, 24th December. None of them. आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लीजिए और फिर उसको रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए. Here are the answers. 14 का है remove this content, 15 का है little corals among nations और 16 का है 24th October. The central and the principal organ of the United Nations is General Assembly, Headquarters, Security Council, UNESCO. The UN, the number of representatives in the General Assembly of each member nation is 1, 3, 5, 6. The Security Council is made up of 15 members, 20 members, 30 members, 50 members. The number of permanent members of the Security Council is 5, 25, 55, and 8. Pause the video, write down your answers in a notebook, and then resume the video so that you can check your answers. Here are the answers. 7 का है General Assembly, 18 का है 5, 19 का है 15 members, और 20 का है 5. Every permanent member of the Security Council has the right to rule, veto, reorganize, fight. The chief officer of the UNO is managing director, chief executive officer, secretary general, general manager. The recent secretary general of the United Nations is Kofi Annan, Ban Ki-moon, Nelson Mandela, Antonio Guterres. The secretary general of the United Nations is appointed by member countries, Security Council, General Assembly, none of these. अपनी वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिखें और रिज्यूम करके सही आंसर्स चेक करें. Here are the answers. 21 का आंसर है वेटो, 22 का आंसर है सेक्रेटरी जनरल और 23 का आंसर है एंटोनियो गुटेरेस. ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2020 फैब 2022 में सॉरी, तो उस वक्त एंटोनियो गुटेरेस ही उसके जो है सेक्रेटरी जनरल है. और इन इयर्स टू कम हो सकता है ये चेंज हो जाए क्योंकि ये सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. 2017 से ये सीट पर मौजूद है, तो माइट बी पॉसिबल इनका टेन्योर अब खत्म होने वाला हो. The Secretary General of the United Nations is appointed by member countries, Security Council, General Assembly, none of these. इसका right answer है General Assembly. चलते हैं आगे next slide की तरफ. The approval for the appointment of Secretary General is granted by member countries, Security Council, General Assembly, member countries. The Secretary General of the United Nations is appointed for a term of 5 years, 10 years, 7 years, 4 years. The Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of organization every year, 3 years, 2 years, and 4 years. Pause the video, write down your answers so that you can mention your answers or check your answers. Here are the answers. 25 का है Security Council, 26 का है 5 members, और 27 का है year. The number of staff working directly under Secretary General is about 3,300, 3,400, 3,550 or 3,500. The headquarters of the United Nations is in Toronto, New York, New Jersey, Chicago. The International Bank lends money to the members for carrying through some work of public interest, diplomatic issue, public importance, and government. अपनी वीडियो को पॉज करें, आंसर्स को नोटबुक में लिख लें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the answers. 28 का आंसर है 3,500, 29 का आंसर है न्यूयॉर्क और 30 का आंसर है पब्लिक इंपॉर्टेंस. UNICEF stands for Children Ideas Exhibition Fund, Children International Emergency Fund, Cavalry Inland European Fund, none of these. UNICEF works for the relief of earthquake victim, flood victim, children, tsunami victim. WHO stands for World Health Organization, World Health Organization, World Hockey Organization, Wealth and Health Organization, Water and Health Organization. अपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लीजिए और उसके बाद इसको रिज्यूम करके चेक कर लें. Here are the answers. 31 का है
इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बट इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इज द राइट आंसर. यूनिसेफ वर्क्स फॉर द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोज सेक्शन से चैप्टर ब्रेक एंड हेड ड्रिल के एमसीक्यूज आप देख सकें, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो आई बटन आ रहा है उसे क्लिक करके उसके एमसीक्यूज आप देख सकते हैं. और इसमें भी इसी तरह से आपके पास जनरल एमसीक्यूज और पास पेपर्स का सॉल्यूशन है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. WHO was affiliated with the United Nations Organization on 7th April 1948, 14th April 1947, 21st April 1949. None of the. WHO works on international health, wildlife health, disease of water, wildlife. FAO stands for Food and Agriculture Organization, Fiction and Art Organization. Finally, Allied Organization, First Art Organization. आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को लिख लीजिए और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the answers. 7th April 1948, International Health, Food and Agriculture Organization. FAO was started in 1943, 1953, 1963, 1947. FAO works on how to increase the yields of minerals, yields of sports goods, yields of farms, fisheries and forest, yield of edible oil. UNESCO stands for United Nations Exceptional Scientist Coordination Organization, Emergency Surgery and Clinical Organization, Education, Science and Culture Organization, Extreme Surgical Cases Organization. आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिख लें और फिर अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the answers. 37 का 1943, 38 का है the yields of farm, fisheries and forest, और 39 का है Education, Science and Culture Organization. UNESCO tries to advance human well-being through politics, reforms, political reforms, social and collective reforms, education, science and culture. The countries. In Far East, half the people live in tents on streets on the Great Sea. In forest, the inland water transport tour of Asian first visited their own countries to examine, in order to examine the view of the people, their own problems, their own facilities, the ships. पॉज करें वीडियो को और अपने एमसीक्यूज को लिखकर वीडियो रिज्यूम करके अपने आंसर्स को टैली कर लें. Here are the answers. Education, science and culture on the Great Sea, their own problems. 43 है the inland water transport of tour of Asian then visited Europe in order to experience and know the operation of aviation, surgeons, traffic, waterways. The inland water transport tour of Asians saw new type of boats in Vietnam and India, Thailand and Burma, England and America, England and Scotland. The on United Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of Security Council, resisting tyranny and aggression, fighting extremism, brotherhood and peace. आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को एक जगह पर लिख लें और उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. So here are the answers. 43 का है waterways, 44 का है England and Scotland, 45 का है brotherhood and peace. अगर आप चाहते हैं कि प्रो सेक्शन के चैप्टर माय बैंक अकाउंट के एमसीक्यूज भी यूं ही आप देख सकें विद पास पेपर सॉल्यूशन, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन शो हो रहा है, उसे क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें. As soon as Indonesia became independent, she asked the United Nations Organization to help them in their war against illiteracy, poverty and hunger. Yaws, terrorism. Yaws is a disease of hot climate, monsoon, hot wet climate, Asia. An example of wonderful effect of the loans of International Bank is found in a small village of or on Uttar Pradesh, the east coast of Mexico, Scotland, the west coast of Mexico. पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और फिर इस वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. Here are the answers.
46 का है योर्स, 47 का है हॉट वेट क्लाइमेट और 48 का है द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको। International Bank gave a loan to a small village on the west coast of Mexico in 1951, 1950, 1952, 1953. After the loan of the International Bank, the population of the village on the west coast of Mexico increased so much, slowly, rapidly, threefold. 51 hai, after the loan of the International Bank, the industrial users of electricity of the village on the west coast of Mexico increased 4 to 42, 3 to 33, 2 to 22, 5 to 55. आप इस वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर वीडियो रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। Here are the answers. 49 का है 1951, 50 का है threefold और 51 का है 3 to 33। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोज सेक्शन के चैप्टर साइंस एंड साइंटिस्ट के एमसीक्यूज भी यूं ही देख सकें विद पास्ट पेपर सॉल्यूशन, तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन शो हो रहा है, उसे क्लिक करके आप उनके एमसीक्यूज देख सकते हैं। After the loan of the International Bank, the number of students in the schools of the village on the west coast of Mexico increased 4 times, 3 times, 2 times and 7 times. पॉज करके लिख लें इसके आंसर्स और चेक कर लें इसके करेक्ट आंसर को। 7 टाइम्स। अब हम जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वीडियो में, और उससे पहले अच्छा ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम पास्ट पेपर्स में आने वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पिछले 11 सालों के, कॉमर्स के 11 साल, साइंस के 11 साल, तो 22 इयर्स के एमसीक्यूज चेक करने वाले हैं जो प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प देंगे। तो उस तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप जानते हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज हैं यूट्यूब वीडियो के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, और इस वीडियो को अपने क्लास वालों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। This part of the United Nations organization work fills us with hope, preventing wars, giving loans, fighting social evils, translating speeches. Yours is a disease of wet climate, hot climate, cold climate, hot wet climate. The Secretary General is appointed by the General Assembly for a period of 5 years, 6 years, 3 years, 4 years. World Health Organization came into being on April 1948, 30, 1956, 1960. Indonesia asked the United Nations to help in their war against polio, yaws, epilepsy, malaria. The chief officer of the United Nations is called the President, the General Secretary, Chairman, Secretary General. The Secretary General of the United Nations is elected by UNESCO, Security Council, FAO, the General Assembly. Yaws is a disease of wet climate, hot climate, cold climate, hot, wet climate. आप अपने आंसर्स को लिख लें पहले और फिर इसको रिज्यूम करके इसके करेक्ट आंसर्स सुन लें। पहले का है फाइटिंग सोशल इविल्स, सेकंड का है हॉट वेट क्लाइमेट, थर्ड का है 5 years, फोर्थ पहले का था फाइटिंग सोशल इविल्स, सेकंड का था हॉट वेट क्लाइमेट, थर्ड का था 5 years और फोर्थ का है 1948. Indonesia asked the United Nations to help in their war against yaws. The chief officer of the United Nations organization is called Secretary General, और Secretary General जो है उसे elect कौन करता है? General Assembly, और yaws disease है hot wet climate की। अगर आप चाहते हैं कि प्रोज सेक्शन के चैप्टर साइंस एंड सोसाइटी के एमसीक्यूज अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन मौजूद है, उसे क्लिक करें और उस वीडियो को भी देख लें। वो भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट होगी, उसके अंदर भी पास्ट पेपर सॉल्व होगा, तो आप देख सकते हैं। All the member nations of the United Nations are represented in General Assembly, Security Council, Secretariat, special agencies,
The principal organ of the United Nations is the General Assembly, World Bank, Security Council, Secretariat. ये 2 बार आ चुका है 12 और 18 दोनों में. The United Nations has achieved success only in preventing war, welfare work, spreading war, controlling superpower. Hunger is the special problem of WHO, UNESCO, UNICEF, FAO. UNO was founded in the year 1930, 1945, 1955, 1965. WHO stands for World Human Rights Organization, World Health Organization, Women Health Organization और Women Hockey Organization. पॉज कर लें वीडियो को, MCQs मार्क कर लें और लिख लें कहीं पे, उसके बाद फिर अपनी वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक करें. तो 9 का आंसर है जनरल असेंबली, 10 का है जनरल असेंबली, 11 का है वेलफेयर वर्क, 12 का है FAO. जो 8th है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1945 और जो लास्ट है 14 उसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप चाहते हैं प्रोज सेक्शन के चैप्टर द वर्ल्ड्स ऑफ सॉनोग्रेट्स के MCQs देखें इसी तरह से विद पास्ट पेपर्स, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन मौजूद है, उसे क्लिक करें और उस वीडियो को भी देख लें. The member of the Security Council which has a veto power is India, Pakistan, Turkey, China. The Second World War started in the year 1914, 1918, 1939, 1945. The Secretary General is elected after every 3 years, 4 years, 3 years and 4 years. ये 2 दफा आ चुका है 2018 और 2017 के पेपर में. In Indonesia, the UNICEF and WHO helped in the fight to cure malaria, polio, yaws, smallpox. The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of permanent members, FAO, the UNESCO, the Security Council. Indonesia asks the United Nations to help her in the war against TB, yaws, cancer, polio. In Indonesia, the UNICEF and WHO helped cure unreasonable fear of something, hatred of something, love of something, extreme love of something. मेरे ख्याल में ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं. ये है इन इंडिया द यूनिसेफ एंड WHO helped curing yaws. All the options given here are wrong. इसका करेक्ट आंसर है yaws. ठीक है. United Nations Day is celebrated every year on October 24. मेरे ख्याल में मैंने पहले आंसर बता दिया. One of the 5 members of the Security Council having a veto power is Russia, Pakistan, India and Germany. आप इस वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स को लिख लीजिए और फिर इसे रिज्यूम करके इसके करेक्ट आंसर्स सुन लें. And here are the answers. पहले का है चाइना, सेकेंड MCQ है 1939, थर्ड है आपके पास 5 years, ऑप्शन गिवन नहीं है लिहाजा 5 years कर लीजिएगा किसी को भी. In Indonesia, the UNICEF and WHO help in the fight to cure yaws. और 5 का है Security Council, 6 का है yaws और 7 में पहले भी बता चुका हूं यहाँ पे yaws ऑप्शन होना चाहिए था. ये चारों ही ऑप्शंस irrelevant है. 8 है United Nations Day celebrated every year on October 24 और 9th है one of the 5 members of the Security Council having a veto power is Russia. अगर आप चाहते हैं प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर है, प्ले है बेसिकली वो द हॉस्टाइल विटनेस, उसके MCQs अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर आई बटन मौजूद है, उसे क्लिक करें और उसके MCQs भी देख लें. Hunger is the special problem of WHO, UNICEF, UNESCO, FAO. World Health Day is celebrated on 24th October, 15 March, 17 March, 21st January. World Health Day is celebrated all over the world on 25th Feb, 7th April, 23rd March, 7th September. Indonesia asks the United Nations to help her in their war against yaws, TB, cancer, polio. This agency of the United Nations organization publishes useful literature on agriculture, forestry and fishing. FAO, UNICEF, UNESCO, WHO. United Nations organization was founded after Civil War, World War II, Battle of Britain, First World War,
From this state of India, malaria was wiped out by WHO. Delhi, Uttar Pradesh, Hyderabad, Bhopal. The Secretary General of the United Nations elected the Security Council, the General Assembly, the Secretariat, UNICEF. The yours is the disease of cold climate, hot climate, wet climate, and hot wet climate. पॉज करें वीडियो को, अपने आंसर्स को लिख लें और फिर रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट ईयर के 218 प्लेस हैं उनकी आपको सारे एमसीक्यूज विद पास पेपर्स मिल जाएं, तो आई बटन पे मौजूद उन दोनों प्लेस के प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक करें और दोनों के एमसीक्यूज चेक कर लें। आंसर सुन लें। हंगर स्पेशल प्रॉब्लम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे is celebrated all over the world on 7th April. That is the right answer. Indonesia asks the United Nations to help her in their war against yaws. This agency of the United Nations organization publishes useful literature on agriculture, forestry and fishing. FAO, UNICEF, UNESCO, WHO. I'm sorry. The right answer is FAO. उसके बाद आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ इंडिया मलेरिया वाज वाइप्ड आउट बाय WHO, उत्तर प्रदेश। 17 का आंसर है जनरल असेंबली और 18 का आंसर है हॉट वेट क्लाइमेट। अगर आप चाहते हैं कि तमाम तर पोएम्स के एमसीक्यूज यूं ही पास पेपर्स के साथ आप देख सकें अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आपके पास जो स्क्रीन का टॉप राइट मौजूद है एरिया, उसमें आई बटन शो हो रहा है, उस पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का तमाम तर पोएम्स के, तो उससे देखें, प्रिपरेशन करें और एंजॉय करें। यहाँ पे आपके पास जो एमसीक्यूज हैं वो है हंगर इज द स्पेशल प्रॉब्लम होना चाहिए था। Problem of WHO, UNESCO, UNICEF, Food and Agriculture Organization. The Secretary General of the United Nations is appointed for a period of 5 years, 7 years, 8 years and 10 years. तो 2009 से लेके 19 तक हर साल तकरीबन इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा गया है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। पॉज करके अपने आंसर्स लिख लें और जवाब सुन लें। हंगर इज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ FAO और सेक्रेटरी जनरल जो है उसे अपॉइंट किया जाता है 5 इयर्स के लिए। दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी इसी तरह से किसी एमसीक्यू के लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सर को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।